क्योंकि मैंने शायद फर्स्ट बैच 92 से पास आउट यहाँ से किया। तो काफ़ी मेरे जो जूनियर्स थे या फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि यहाँ फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी थी। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, उस टाइम जब मैं स्टूडेंट था सोच अलग टाइप की थी। लेकिन लगभग 15 साल मैंने IIT बॉम्बे गुजारे हैं। देखा कि लोग कैसे काम करते हैं, कैसे सिलेक्शंस होती हैं, किन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्पून फीडिंग की बात है वो तो बिल्कुल थी ही नहीं। लगभग स्ट्रेस से सारा काम हमने सीखा है। मुझे याद है मैंने डॉक्टर बोरा के पास अपनी प्रोजेक्ट की थी। तो जब मैं लेके IIT बॉम्बे गया, मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, तो उन्होंने उसको देख के बोला कि बेटा ये वाला जो काम है शायद हम एमटेक में भी अभी नहीं कराते जो आप MSc में वहाँ से करके आए हो, क्योंकि ये टॉपिक तो अभी मार्केट में आया ही नहीं है, इस पर बहुत कम काम हुआ है। इमीडिएटली जस्ट उस रिपोर्ट के बेस पे मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था। और जापान में भी मोनकुशो स्कॉलरशिप, दैट इज द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप that was given to me only on the basis of what I have learned from our teachers here, even though the department। तो IIT में एक कल्चर मैंने देखा है वहाँ पे कि टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। हम इल्ज़ाम लगाते हैं टीचर्स के ऊपर, टीचर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं जो भी करते हैं, लेकिन मैंने क्या देखा कि वहाँ पे बच्चे ही सब कुछ हैं। वो मेन काम जो टीचिंग आवर्स हैं 9 से लेकर 5 बजे 6 बजे तक, उसका तो कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट बैठते हैं लगभग खाना खाने के तुरंत बैठ, फिर सुबह तक 3 बजे 4 बजे, हमें याद है कि नॉर्मली हम सुबह 5 बजे लैब से आते थे और कई बार तो 5 बजे आके 8 बजे दोबारा फिर चले जाते थे, जो हमारी हालत थी वहाँ पे। लेकिन वो जो सीखा उसके बेस पे कई सिस्टम्स भी मैंने आके डिज़ाइन किए। आज मेरे पास 3 पेटेंट हैं इंडस्ट्री के, जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए आवाज़ पैदा करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। और इसी नॉलेज की बेस पे लगभग ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं रहा है जहाँ पे मैं रिजेक्ट किया गया हूँ। लगभग सभी में पास कर देते थे। और जो बात करते थे हम, क्योंकि सब कुछ सीखने में सीखा था, कुछ भी पूछते थे वो लैब कैसे सेट करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा चाहिएगा वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने लैब सेट होते देखी थी, टीचर्स को काम करते देखा था, बोरा साहब रात को हमारे साथ बहुत बार आते थे, क्योंकि ये भी उस टाइम शायद नए थे। मैं तो बिल्कुल था उस टाइम में शादीशुदा नहीं थे। इनको उस टाइम म्यूजिक का काफी शौक था। कई बार ये गिटार लेके आते थे म्यूजिक स्कूल में, मुझे लगता है कि सीखने जाते थे। लेकिन हमने इनको बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इच्छा है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको बहाना मारने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटी है या नहीं है, तो 2 लाइनें इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। मेरी एक कविता पब्लिश्ड है इसके बारे में, उसका टाइटल है मैं ठोकर खाना चाहता हूँ। उसका एक्सटेंजा इससे जस्ट मैं पढ़ूंगा। मैं टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर जाना चाहता हूँ, मैं सीधे रास्तों से बच जाना चाहता हूँ, क्योंकि सीधे रास्ते देते नहीं अभ्यास असली जिंदगी का मुझको। बस मैं तो अभ्यासी बनना चाहता हूँ, आगे वाली ठोकर से बच जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले ही ठोकर खाना चाहता हूँ। To the students who have got the jobs, forget about them. I'm talking about the white shirt people who have yet to enter the sector. See, sometimes we concentrate too much on the marks, how many marks we will get, and forget so many things. I will just, if Praveen will allow me, Praveen was not our topper in the class. His marks were not that great, but he always was one of the genius students in our batch. He always went into the depth of the subject. He never studied for getting the marks and getting the first in the class. And we are proud, one of our batchmates is doing PhD under him right now. So that he can only do when his basics, he was going to details of the subject. He never cared about the marks, whether I should get an A grade or I should be the topping of the class. For you guys, please, just study for the, just for the study. Don't study for marks. Even though you get less marks, that doesn't matter. Those marks will take you very short distance in the beginning. But in the longer run, only the knowledge, the basics what you have, that will only take you far. Please just give basic education in yourself and strengthen your knowledge. That's it. Rajiv has a wide experience in public sector companies. He is now in BSNL. Maybe he will throw some light how to be improved placement in public sector. Thank you.
गवर्नमेंट जॉब इसलिए प्राइवेट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता था, और नीरज पंडित जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए तो कोई भी कंपटीशन मुश्किल नहीं है। मार्क्स के लिए मत जाइए, सिर्फ बेसिक ही स्ट्रॉन्ग रखिए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी मेहनत और लगन और बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर कभी भी कंपटीशन क्लियर हो सकता है, कोई भी कहीं भी आप पास आउट हो सकते हैं। थैंक यू। We have Rohit with us. He can say something on placement in private sector. So most of the members here have already mentioned that you need to stay on focused on your basics. I would like to add something that because I have been on the both sides of the coin. I was a student like a couple of years back, and now I have been in a position where we have to interview lots of the candidates. Stay always hungry for the knowledge. Knowledge is which is going to take you longer than even like even after spending like 12 hours in the private industry, I am still learning. Even every day we learn new things. We learn from everyone who is around us. So always stay hungry for the knowledge, stay focused. That is what is going to take you to your goal. Thank you. A few alumni is helping, but I would like to have a stronger network of alumni involved in the. I would like to see their involvement in training and placement. Of course, many of them are getting into senior positions now only, so it was not easy earlier. But I think now we have reached a level where many of our alumni can help us in training and placement. डिस्कशन के मूवमेंट में एक तरह यूज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जो हमारे एलुमनाई आए हैं, खासकर जो 10 साल पुराने यंग जो हैं, उन तो मैं कांटेक्ट में रहा हूँ। जो 10 साल पुराने मैं कई लोगों की शक्ल भी भूल गया था और समाव मेरी मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है। नाम भी भूल रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आज कईयों के नाम दोबारा रिवाइज हुए और सारी चीज़ें हुई। और इस पैनल डिस्कशन के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ मिथ है अभी लोगों के मन में। समहाउ एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हरियाणा में केवल एक ही यूनिवर्सिटी में कोर्स चल रहा है, और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के फील्ड में जो चल रही है, वो कम से कम यहाँ पे सैकड़ों कॉलेजेस हैं और कई हज़ार बच्चे हम बीटेक की डिग्री देते हैं, कई हज़ार बच्चों को। तो यदि ऐसा है तो समहाउ हमें ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है यहाँ पर कि जो ऑलरेडी झलक रहा है, काफ़ी हमारे जो पुराने पास आउट स्टूडेंट्स उससे झलकता है कि जो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स पास कर भी गए, दे आर डिफरेंट देन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली। क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है 2 साल की, मैंने देखा है कि चाहे कुछ भी सही, हमारे में बहुत कमियां हैं, नो डाउट, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं पढ़ाई देखता हूँ, मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर हूँ यूआईटी का, मैं वहाँ देखता हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे कराए जाते हैं लैब में, और जो हमारे डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं वो किस तरीके से कराए जाते हैं, बहुत डिफरेंस है। जो हमारे प्रैक्टिकल में जो लर्निंग प्रोसीजर है, लर्निंग जो स्टेप्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है बजाय के इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो इसलिए मैं अपने एमएससी के स्टूडेंट्स को इतना कहना चाहूँगा कि यू सी दिस इज वन ऑफ द गुड डिपार्टमेंट एंड यू हैव सीन द बेस्ट product of this department. Some of them are sitting here who are working in wonderful companies in the which are best companies in the world, and many of the students are sitting on other side of this stage also who are actually working at very good places. यदि ऐसा है तो you must take some kind of motivation from these icons and try to follow their advice, what they are saying, that please concentrate on your basics and all kinds of skills you must harness. And I tell you, there is no problem, you are not worse or not in any case inferior to any BTech MTech student, because I am not here actually saying something कि भाई मैं बीटेक को नेगेटिव बीटेक के लिए बोल रहा हूँ, बट आई टेल यू फॉर एमएससी स्टूडेंट्स, उनके मन में समाव ये रहता हमेशा रहा है कि हम पता नहीं सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हमें जॉब नहीं मिलती, बीटेक को जॉब मिलती है, ऐसी कुछ मन में मिथ रही है स्टूडेंट्स के। एंड बट आई थिंक नाउ एज नीरज हैज सेड, रोहित हैज सेड, एंड ऑल पीपल आर टॉकिंग हियर, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिग्री, but whether you are a BTech or MTech, it is a question of your knowledge and understanding and the way you present it. Even he has said the marks का कोई फर्क नहीं पड़ता एक लेवल के बाद में। I understand, I agree with him definitely कि यदि आपके मार्क्स एक लेवल से ऊपर हैं, सपोज 65-70% से मार्क्स आपके ऊपर हैं, फिर सारे के सारे बराबर ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें फर्क इतना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप चीज़ को समझते कैसे हैं, those things are important rather than only getting marks or not understanding anything.
सो इन शब्दों के साथ मैं अगेन यही कहूँगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, बीटेक और एमएससी में कोई फ़र्क नहीं है. एमएससी इज़ ए वेरी टेक्निकल डिग्री. इनफैक्ट अभी ने किसी स्टूडेंट ने मेरे को ईमेल भेजी थी उसमें कि डीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्विवेलेंट टू बीटेक. बहुत खुश हो रहे थे सारे स्टूडेंट्स, सब देखो हम इक्विवेलेंट हो गए हैं. पर मैं उनको कहता हूँ इक्विवेलेंट नहीं, हम तो उनसे ज़्यादा हैं. वी आर ए मास्टर डिग्री. एमएससी की डिग्री हमारी मास्टर डिग्री है और उनसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, 5 साल हम पढ़ते हैं. तो वी शुड नॉट थिंक इन एनी टर्म कि हम उनके बराबर हैं या उनसे इन्फीरियर हैं. हमें हमेशा अपने आप को डिफरेंट समझना चाहिए. हमारे स्टूडेंट जो अच्छी नॉलेज जो ले रहे हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनी का काम कर रहे हैं, उनको एक अलग लेवल में रहना चाहिए, अलग मोटिवेशन लेवल रखना चाहिए. और कोई प्लेसमेंट की और ट्रेनिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. एज नीरज एंड रोहित एंड Praveen, they have said, I think these are some of the important things. Please take care of this. Thank you very much. If you have some questions, we can take 2-3 questions right away. Any questions from students? Any questions from the students? The students can ask any question now. Alumni who have come from far off places, they must interact, they must find out. उनके अंदर की जो कुछ सवाल पूछने का जो लगता है बाद में जो मन में रहती है, पूछना उनको, शर्माएं नहीं. I would say please ask any questions because this is important. Don't think this is a silly question or a very small question. I mean, जब हम लोग भी सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए एक स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? IES की preparation. IES. It is a question for Rajiv. Rajiv. कंपटीशन में किसी में भी आईएएस में स्पेशली जैसे 800 नंबर का सब्जेक्ट है, तो अगर वो आपका बहुत अच्छा हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सिंपली है कि बेसिक्स क्लियर रखें. मार्क्स का कोई ज़्यादा, जैसे सर ने कहा है 60-65% मार्क्स काफ़ी हैं. और अगर आपके ईएस में इतने आ जाते हैं तो आप टॉपर ही होंगे. तो इसलिए बेसिक्स ही क्लियर करें अपने, उसमें कोई जल्दबाजी शॉर्टकट ना अपनाएं. अगर नहीं क्लियर हो रहा है एक बुक से तो दूसरी से पढ़े, तो बेसिक क्लियर होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कंपटीशन. सर मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है या पब्लिक सेक्टर? If you want a relaxed life, go to public sector. If you want a challenging life, go to the private sector. But in private sector, you have to deliver. You have to work hard, and you can go to any height as long as you deliver. But sir, learning process के लिए पूछ रहा हूँ. Learning for the process of learning. He's saying that whether they can. Competitive world, everybody invest a lot in their research, laboratories, and all these things in public sectors. You know, the government processes and all these things. So they don't get the funding at right time. They don't get the lab. Even you can see what happens to our departments here. If you have to buy even one oscilloscope, it will take you 10 years to get an approval. So definitely in private sectors, you get approval fast. People invest, and there's a lots of research going inside the companies. Definitely private sector is definitely better. Sir, this is a question for training or training purpose. So I have not worked in the public sectors, but definitely Want to make money or something. For training purpose. Exposure to the latest technologies, and that is which can help you, because industry have to work at the recent technologies. Industry cannot work on the decade-old technologies, so they have to work on the latest technologies. That is where the exposure comes from. So if you are working on the latest exposure, if you are working on the latest technologies, the industry knows that. If you know this, that means you are at par with the industry, so that you will be helpful for them. So that's where the advantage of working in private sector is. Sir, but if what sector want you to be in? If you go to a communication sector, what you can do in ISRO and DRDO. So it depends upon what sector you have chosen. So of course, if you go into defense or you are doing something in the semicon, definitely DRDO and ISRO, or you want to go into space technology. yes, sir, working in CMOS technology. Yes, but if you compare ISRO
with Intel, Texas, AMD, they are 1,000 years behind them in the investment. 2 or 3 years? Years, India was only concentrated on the software. And what is happening with software, we are not generating so much of jobs here. And our imports of electronics is more than our oil bills, which is an alarming situation for our country. And lots of discussion has been happening. Lots of association like Electronics and Semiconductor Association, ELSINA, and lots of related to this field have been in touch with the government. And I had the opportunity also be part of those discussions earlier. I met Dr. Ajay Kumar, who is the Secretary of Electronics. And from last 4 or 5 years, there's a lots of discussion, and government has come out with a new policy beginning of last year. So there is a lots of focus on the electronics management. I mean, I would still say it does not contribute 90% of marks or 50% of marks. However, if you can compensate your communication skill with the technical skill, if you can compensate your communication with your technical skills, then probably you can through with it. So it depends. But since for freshers there is no much expectations to high technical, they ask the fundamental questions. So my recommendation is just ask your colleagues where your interview is going to be held. So just ask and do your homework. What sort of questions they ask? Are they working on the analog side or the digital sides? These are two major top parts. So once you are decided, then at least do your homework. You should be fully prepared with your section. So once you are done, because I can understand, most of you are probably from deep from Haryana, so their essence probably is difficult to match the industry's essence. So don't worry. Compensate it with your technical skills. I think you will go through with that. You can compensate with that. Thank you. You need not to be in the sales and marketing. You need not to just look for a job which is a technical sales or a sales and marketing or any other job where you have to interact more with the people. But if you are technically sound, you should go to a different sector like a research and center, ISRO, or some labs where we have not to interact more and you just implement your technical knowledge. Understand what your strengths are. Don't follow because everybody is doing PhD, I have to also do PhD. Or everybody is going in Siemens, I have to also go in Siemens. See your strength, see what you are good at and just follow that one. Don't follow the crowd. Roughly 2-3 weeks ago, one of the companies visited in our campus. But the main problem we are facing with the technical skills. First, your fundamentals should be clear. That is the more important thing. After that, you can concentrate yourself on the communication skills. Without communication, you can pursue your careers. But without your fundamentals, you cannot pursue your careers furthermore. That is more important. Thanks, sir. Incident of last month. One of my BTech students, and I am working as a teacher, as an assistant professor, EC, as well as training and placement officer, and head of foreign affairs center for my course. And one of our brilliant students not selected in that company. The reason was she had completed lots of projects, but only copy paste all the projects. What she had 2-3 projects and mention by all the professors and others. Thank you so much. We have Nitin somewhere, Nitin Sharma. Yeah, please come forward. Yeah, Piyush. So just